Okay, good evening. I'm going to share the screen. Tell me once it is visible. As I told you, we'll be starting with Unit 6 today. Okay, as we have already finished Unit number 5. Yes. Okay, the, the name of the unit is How Often Do You Exercise? As the unit suggests, as the title suggests, we'll be talking about health and exercise over here along with our simple present tense and how often matlab kya. प्राय मतलब जो Mhm. often means in regular basis or कितनी बार जब हमें पूछना तीन हो बार कितनी बार हाँ फॉर हाँ एग्जाम्पल आई कैन आस्क यू हाउ ऑफन डू यू गो टू द ऑफिस जी और राइट हाउ ऑफन डू यू वर्क फ्रॉम होम. ओके, तो मैं पूछ रही हूँ कितनी बार. तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाँ frequency पूछ रहे हैं. So that is what we are going to look at today, how to use adverbs of frequency in this particular unit. Okay, which is basically used with our simple present tense again, the way I said. Now, ओके first thing, the first exercise that you have as a warm up over here is the top 5 sports and fitness activities which are there in the US. Okay, now I want you to tick mark the activities that you enjoy. जो यहाँ पर पांच पांच दिए हैं sports and fitness activities, whichever activities you enjoy, I want you to tick mark them quickly. आप ओके सिर्फ लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, हाँ that is fine. डन डन Done. Okay, now you have to tell me, do people in our country enjoy any of these sports or activities? यस Mm-hmm. Which ones? so for sports like football Mm-hmm. I can say or football or basketball Okay. actually I have not uh, played Mm-hmm. ever baseball, soccer, softball, and actually I'm not familiar, so I can't comment on that. Okay. I've seen football and basketball because when I was in my college, so college time also, all boys was playing the football only, or Mm-hmm. state wise also. If I have to talk, like in West Bengal, Mm-hmm. all the students from that state was always actually interested to play football Mm-hmm. rather than cricket. But Okay. as we are from north side like UP, Bihar, and Delhi, so we were interested in playing cricket. So that's why I said football Mm-hmm. rather than this because I have never seen baseball, soccer, or softball. Okay. No worries. Now, Yeah, and, what about fitness activities? yes. So for fitness activity, I'll say all because only weight training I have not done. Otherwise, everything I have done. Okay. So, but I have seen in gym so many people Mm-hmm. doing weight training. Okay. Now I want you to list down the other activities or sports that people in our country enjoy as well as that you do. Okay? और Okay, कौन से एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स है वो सिर्फ नाम लिखने हैं आपको जो okay, आप okay. एंजॉय करते हो एंड हमारी कंट्री में और लोग भी एंजॉय करते हैं. ओके, आई विल गिव यू 2 minutes, ट्राई टू डू दैट, आई विल बी बैक इन 2 minutes. ओके.
once you're done. Yes. So I have done for a sports. I'm just writing fitness activity. Okay. Yes, I'm done. So for a sports, Mm-hmm. I have written cricket because Okay. we have IPL. Uh-huh. Kabaddi, again, we have um, league match teams, right? For Kabaddi as well. Then I have written table tennis, volleyball. Mm-hmm. Yes, lawn tennis and all. That's For it. fitness activities, I have written yoga, Zumba, dance. These are the fitness activities Very other good. than which has been listed. Which have been listed. Okay, very good. Now, next over here, we have an exercise where you have to Okay. just tick mark the. Am I audible clearly? Bicycle, yes. I forgot to mention cycling. Yes. Okay. Bowling, golf, आवाज आ karate, रही है मेरी क्लियरली? swimming. Yes. Volleyball. समहाउ मैं ओके, ग्रुप पे दिख कुछ रही हूँ. तो आई डोंट लिखा नो हूँ व्हाई. मैं योगा. यस. योगा, वॉलीबॉल, टेनिस, स्विमिंग आई फॉरगॉट, Mm-hmm. गोल्फ. यस. पीपल एक्चुअली Okay, no worries. Now in this डू exercise दैट जो बट A पार्ट है ना वो आप होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है? वो B पार्ट है वो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो है नहीं, कुछ कम लोग ही गोल्फ खेलते होंगे. हाँ, but बॉलिंग यस, in the upper एरोबिक्स class यस, it's actually जुम्बा very यस. famous. Golf. Okay. Which of the with the following group check okay, Yeah. then compare with the partner. Yeah. So basically in first Okay, exercise आपको वही aerobics, करना है कि जो ग्रुप में फेमस है. bicycling, Am I audible clearly? ideally, लास्ट वन क्या है मैम, कौन सा? पीपल, मेरी साइडर आवाज आ रही है क्या क्लियरली? है? नहीं. हम्म, Nice. One second. ये स्क्रीन ये हो गया. One second. One second. Just 1 second. There is some issue with my mic currently. बीच में ही मेरा mic ना बंद हो जाता है. I don't understand why. Okay. Yeah. Am I audible clearly now? Yes, yes, Yeah. yes. Okay. So as I was telling you, over here exercise A आप बाद में कर सकते हो होमवर्क में, कोई इशू नहीं हाँ. है. Exercise B is important for us. In exercise A you simply have to tick mark the activities which are famous according to the age groups, okay, popular according to the age groups. Now exercise B is important for us because we need to understand the collocations that we use with them, okay. हम जो activities की बात करते हैं तो उनके साथ में कौन से verbs यूज करते हैं, कौन से verbs करेक्ट होते हैं, ठीक है. तो हमारे तीन मेन वर्ब्स है जो यहाँ हम देख रहे हैं, विच इज डू, गो एंड प्ले. Okay, so whenever we want to talk about any activities, okay, physical activities basically, fitness activities or individual exercises, we'll use do. Okay, for example, we do yoga, we do zumba, ठीक है. Then whenever we want to talk about any activity or sports that we do or play with a ball, we will use the word play, ठीक है. वी प्ले गोल्फ, वी प्ले क्रिकेट, एग्जाम्पल, ठीक है. फिर आता है हमारे एक्टिविटीज जो हम आईएनजी से एंड करते हैं, ओके. फॉर एग्जाम्पल बोलिंग, एक्सेप्ट वेट ट्रेनिंग, बाकी सारे जो भी एक्टिविटीज़ है जैसे कि साइकिलिंग हो गया, बाइसिकलिंग हो गया, तो उसके साथ में हम यूज़ करेंगे गो, ठीक है. ये करेक्ट वर्ब हमारा रहेगा. सो दैट इज द मेन रूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. राइट इट डाउन क्विकली, राइट डाउन द रूल्स क्विकली.
Done, ma'am. Done. Now what you have to do over here, all the activities which are given over here, you have to use them and write them down with the correct verbs quickly. Okay. Done, ma'am. Okay, tell me the answers. Yeah, the first one is already written. Do aerobics, go bicycling, play golf. Then I have written go for bowling, Bowling. Bowling. bowling, Mhm. go bowling. Then do karate, do swimming, play tennis, play volleyball. Swimming. Go swimming. We go. Uh, We go swimming. okay, go swimming. Okay, do swimming. Go swimming. Okay, go swimming. Do karate, right? Correct. And then I have written play tennis, play volleyball, do yoga. Very good. Correct. Okay, understood how to use them? Very Yes. good. Now, next over here, we have a conversation. I want you to quickly read the conversation. Here, two people are talking about exercising again using the adverbs of frequency. Okay, so while reading the conversation, also focus on the adverbs of frequency. ठीक है? Okay. Yeah, right. So, okay, Mary, uh, you are really fit, Paul. Do you exercise a lot, Paul? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Mary, seriously? Paul, sure. And then I often go swimming. Mary, wow. How often do you exercise like that, Paul? About 5 times a week. What about you, Mary? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Very good. Understood? Couch potato क्या होता है? सोफा पे बैठने वाला मतलब जस्ट व्हाट आई अंडरस्टूड Yeah, yeah. एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता. Exactly. Couch potato are the people who are basically थोड़ा सा lazy बोल सकते हैं, जो basically कुछ काम नहीं करते. They are on the sofa watching TV the whole day. Okay. Of course, we are partial couch potatoes after working for Yes, yes. long hours. So yes, but again, it's well deserved because we work hard. So yeah. Okay, Right. so the conversation is pretty easy. Here, Mary says, "Okay, you are really fit. Do you exercise a lot?" Then he says, "Yes, I almost always get up early and lift weights for an hour." मतलब मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ जल्दी उठ के आई लिफ्ट वेट्स फॉर एन आवर ठीक है देन शी से सीरियसली देन ही से श्योर एंड देन आई ऑफन गो स्विमिंग तो वो स्विमिंग भी करता है उसके साथ में देन वो पूछती है हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज लाइक दैट तो वो बोलता है अबाउट 5 times a week सो ही इज आस्किंग अबाउट फ्रीक्वेंसी शी इज आस्किंग अबाउट फ्रीक्वेंसी बेसिकली ही टॉक्स अबाउट फ्रीक्वेंसी के 5 times a week नाउ
वो उसको पूछता है फिर व्हाट अबाउट यू, देन शी सेज आई हार्डली एवर एक्सरसाइज, मतलब मैं बहुत कम एक्सरसाइज करती हूँ, आई यूजुअली जस्ट वॉच टीवी इन माय फ्री टाइम, एंड देन शी calls herself a couch potato. Okay, now quickly we are going to listen to the same conversation to understand the intonations better. Okay, just Yes. one second. Yeah. CD2, Unit 6. How often do you exercise? Page 37, Exercise 3. Conversation. I hardly ever exercise. Part A. Listen and practice. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, now we'll listen to the second part of the conversation. Here you have to focus on the question, what else does Paul do in his free time? ठीक है, what else does Paul do in his free time, मतलब वो उसके फ्री टाइम में और क्या चीजें करता है, ठीक है. Page 37, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. What else does Paul do in his free time? What else do you like to do, Paul? Well, I like video games a lot. I play them every day. It drives my mom crazy. Hey, I play video games all the time, too. Well, listen, I have some great new games. Why don't we play some after class today? Okay. Okay, so what else does Paul do in his free time? Video game. Video Uh, game क्या? he's playing video game. He plays. He He plays video games. Simple yes, present tense. simple present tense. Yes. He plays video games in his free time. Okay, very Yes. good. Now next, as I said, here we have adverbs of frequency. अभी adverbs क्या रहते हैं? Adverbs basically give us more information about verbs, adjectives and other adverbs. Okay? Verbs क्या रहते हैं? Action words हमारे, हमें पता है already. Adjectives, they give us more information about nouns and pronouns. Correct? And then we have adverbs. Adverbs हमें इनके बारे में, verbs and adjectives के बारे में और information देते हैं and other adverbs के बारे में भी. For example, I can say I wrote all the answers, but then I can say I wrote all the answers correctly. ठीक है, तो correctly becomes the adverb over here. ठीक है, so अलग अलग टाइप के adverbs रहते हैं. हम यहाँ पर पहले मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे. फ्रीक्वेंसी मतलब हम कितने बार कोई चीज करते हैं. ओके, नाउ मेन adverbs that we have over here are always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never and never. ठीक है, सो व्हेन आई से नेवर मतलब 0%, कभी भी नहीं. ठीक है, ऑलमोस्ट नेवर मतलब वी कैन से 5% to 10%, बहुत कम बार. ठीक है, मतलब एकदम बोल सकते हैं हम कभी भी नहीं टाइप ही. ठीक है, फिर आता है हार्डली एवर, मतलब एकदम वंस इन अ ब्लू मून हम बोलते हैं ना वैसे. ठीक है, हार्डली एवर, आई हार्डली एवर गो आउट टू इट. ठीक है, देन आता है समटाइम्स मतलब कभी कभी. देन आता है ऑफन मतलब बहुत बार. देन आता है यूजुअली मतलब ऑलमोस्ट 5 times आउट ऑफ अ वीक. देन ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब 90-95%. ठीक है, फिर आता है 100% जो कि है ऑलवेज. ठीक है, Yes. अगेन नाउ when we want to ask about frequency, we know that we make two types of questions, correct? We have WH Yes. questions and then we have yes and no questions. Yes. WH questions जो हमारे रहते हैं, we can ask how often do you do something. ठीक है, how often do you exercise, how often do you go out, how often do you go to office, ऐसे करके हम पूछ सकते हैं. And then when we want to ask yes and no questions, we can ask with do you ever. ठीक है, डू यू एवर वॉच टीवी इन द इवनिंग, डू यू एवर वर्क फ्रॉम होम, ऐसे करके. अभी यहाँ पर हमें जब आंसर देना है तब हम यूज करेंगे वर्ब्स यूज करेंगे. अभी एडवर्ब्स का आपका प्लेसमेंट आवाज बहुत. गया मैम. हेलो, अरे यार,
One second. Mhm. Am I audible now? Yes, yes. Huh. Okay, one second. Okay, as I was telling you, when we want to answer, we'll answer with yes and no when we are talking about yes and no questions. But Yes. हमारे मेन हो जाता है यहाँ पर एडवर्ब्स के प्लेसमेंट. ओके ये जो हमारे एडवर्ब्स है उनका प्लेसमेंट हम कहाँ करेंगे सेंटेंस में. अभी हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. करेक्ट. तो हमारे जो एडवर्ब्स है वो आएंगे वर्ब के पहले एंड सब्जेक्ट के बाद में. ठीक है. आई ऑफन वॉच टीवी आफ्टर डिनर. आई समटाइम्स वॉच टीवी बिफोर बेड. आई हार्डली एवर वॉच टीवी. नो आई नेवर वॉच टीवी. ठीक है. अभी यूजुअली एंड समटाइम्स है वो स्टार्ट में भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. बट एज वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस प्लेसमेंट हम उसको सब्जेक्ट के बाद में ही यूज करेंगे उनको सबको. ठीक है. आई यूजुअली गेट अप अर्ली. आई यूजुअली गो टू ऑफिस एट 10 AM ऐसे करके आप उसको बोल सकते हो. या सो सब्जेक्ट फिर एडवर्ब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फिर आएगा हमारा वर्ब एंड फिर आएगा एंड में ऑब्जेक्ट. ठीक है. अभी एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ ऑफन उनके आंसर्स जो हम देते हैं वो हम वंस अ वीक एवरी डे ट्वाइस अ मंथ 3 times अ ईयर ऐसे करके हम आंसर दे सकते हैं. करेक्ट. तो ये जो हमारे वर्ड्स है एवरी डे वंस अ वीक ट्वाइस अ मंथ इनको हम हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज करेंगे. ठीक है. ये हमें मेन याद रखना है. आई लिफ्ट वेट्स एवरी डे. आई गो जॉगिंग वंस अ वीक. आई प्ले सॉकर ट्वाइस अ मंथ. आई स्विम अबाउट 3 times अ ईयर. आई डोंट एक्सरसाइज वेरी ऑफन. यस अगेन हमारा यहाँ पर एंड में आ रहा है. एंड यूजुअली आई एक्सरसाइज बिफोर वर्क ऐसे करके भी हम बोल सकते हैं. क्लियर. Clear. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन. No. नो ना. ठीक है. रूल्स लिख लीजिए जल्दी से. ये रूल लास्ट वाला मेन है. एडवर्ब्स कम बिफोर मेन वर्ब्स. ठीक है. और अगर हम बाय चांस इज एम आर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उनके बाद में आएगा. Okay. ठीक है. बट मोस्टली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो मेन वर्ब के पहले आएगा. ये आप याद रखिएगा. हम्म, क्या बोला मैम आपने? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इनको यूज करते हैं ना एज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी. यस, यस. फ्रीक्वेंसी हम बार बार जो कर रहे हैं उसके साथ में ही बात करेंगे रिपीटेशन के साथ में. तो वर्ब के पहले आएगा. यस. ठीक है. और मैम वो लास्ट वाला स्लाइड का वो मेरे को वो ग्राफ वो हाँ. 100 to 0% वाला क्यों. भी. हम्म. डन. नेक्स्ट स्लाइड. हम्म. Yeah.
None, ma'am. Okay, next. Here you have to complete this exercise. The words are given which you have to use, and the main thing is इनका correct placement आपको करना है. Again same way in question, verb के पहले ही आपके adverbs आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन में भी सेम ही प्लेसमेंट रहता है उनका. verbs के पहले adverbs आएंगे when we are trying to place them. Now you just need to use the verbs, adverbs, and rewrite the sentences over here. ठीक है. Yes, ma'am. Done. Hello. Yeah, tell me the answers.